I'm singing. Hi. Wow, that was funny. I thought it was funny. Hi guys, we are back. I believe we missed you more than you missed us. Or maybe I'm assuming that you guys missed us. Hi guys. I somehow somewhere missed these whitey lives. So yeah, so we are back with a new concept. And so हमने बोला था we'll be taking some break and we'll be coming back. But वो break भी शुरू होते ही खत्म हो गया and we are back in a span of 2 days, I guess. Well, thanks to Indian sport, because now we have had an historical chess Olympiad, we just drew the curtains yesterday, और उसके बाद 15 years of Chak De India. I mean, it 15 years of Chak De India. अगर आप इस बारे में बात नहीं करें तो फिर किस बारे में बात करें? यही बात है. Yep. People asking क्या सीन है चेस ओलंपियाड का, वही सीन बताने आए हैं हम. What happened in chess Olympiad, हमने क्या जीता क्या हारा, मतलब what medals did we win, how did the whole Olympiad go. Then again, my favorite movie, and I think सब लोगों का favorite movie, Chak De India, it completes 15 years today since it was released in 2007. So we'll be discussing about that. You can ask your questions वगैरह. तो welcome back everyone. I can see all the old names in the chat. Hello, hello. Yeah, hi Sinha, S Sinha, hi. Thank you. तो हमारे यहाँ जो चेस ओलंपियाड बेसिकली द वन वी होस्टेड इट वाज क्वाइट हिस्टोरिक और उसको वेलकम भी लोगों ने इस तरीके से किया. वी पेंटेड चेन्नई में जो नेपर ब्रिज था इट वाज बिल्कुल वाइब दे रहा था उसको. बिल्कुल चेस का जो कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट, इट वाज ऑल पेंटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस ब्लॉक्स. और उसके बाद मतलब the way people from Chennai, people from Tamil Nadu accepted the idea of chess in the state was amazing. And जितना इंटरव्यूज मैंने सुने हैं और जितने इंटरव्यूज मैंने पढ़े उस हिसाब से चेस ओलंपियाड बिल्कुल became historic, not just in terms of what Indian women did, Indian chess women did, मतलब जो हमारी टीम थी उन्होंने किया, उसके अलावा भी the way we received chess as a society, as guests, etc., etc. So it was amazing. Yep, lot of things happened. As you said, chess मतलब वो नेपियर ब्रिज है उसको चेस बोर्ड के कलर में they हाँ. painted it in black and white squares. They also played a chess match underwater. तो off the coast of Yeah. Tamil Nadu underwater chess भी खेला गया था. That happened. Yeah. और मतलब बहुत सारी चीजें हुई थी ये 44 चेस ओलंपियाड के पहले. Like as we mentioned two things. You could see the mascot Thambi. तो postage stamp भी एक हुआ था Thambi के लिए. And we could see Thambi all over Chennai. We also made a reel. You can see on Bridge social media. Yeah. और उसके बाद the Olympiad was except for China and Russia, which was kind of sad कि वो दोनों कंट्रीज नहीं है यहाँ पे, considering how मतलब उनका influence इतना ज़्यादा है chess society पे. But उसके बावजूद we had almost 2,000 players from 188 countries और उसमें champions like Magnus Carlsen and Fabiano. There was Wesley, then we had Maria. तो वो सभी के सभी they all gathered in Mahabalipuram, a shore a shore town near Chennai. And even Tamil Nadu यार, it is home of मतलब हमारे अब 75 ग्रैंड मास्टर्स हो गए हैं, तो उसके में total out of total we have 26 grand masters just from Tamil Nadu. So it's just a capital of India. Yep. So as you mentioned, yes, Russia and China did not participate this time. China ने reason नहीं दिए. उनका best player Ding Liren, he was playing in Madrid. They did not come. And China is a very strong team. आप अगर men में देखेंगे, women, they have been champions in the previous editions. Recently बहुत strong लगा है. Russia, of course, Russia invaded Ukraine, so Russia ने miss out किया इस बार. Russia was not allowed to play this. As we all know, Russia or previously Soviet Union has been the powerhouse of chess. And many say that Vishwanathan Anand was the first person to break this domination after all those Soviet and Soviet grandmasters who became world champions.
तो रशिया और चाइना नहीं थे एंड इन पाकिस्तान की जो टीम थी दे हैड कम टू चेस ओलंपियाड बट देन पाकिस्तान डिसाइडेड टू बॉयकॉट बिकॉज देयर वाज सम रैली द मेडल टॉर्च sorry the torch relay was through Jammu and Kashmir so then they decided to boycott this so Russia China and Pakistan were the three nations missing out mainly but we had 180 plus nations so it was as global an affair as can get एग्जैक्टली और सिंस इंडिया वाज होस्टिंग तो इंडिया बेसिकली व्हाट इंडिया डिड कि मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में सो वी हैड ओपन सेक्शंस तो बेसिक सा मैं आपको समझा दूंगी चेस ओलंपियाड में किस तरीके की टीम्स प्लेस हुई थी तो वी हैड 6 टीम्स पार्टिसिपेटिंग यूजुअली दो हर सेक्शन में दो दो टीम्स प्लेस होती हैं बट इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग जस्ट 2 टीम्स हमने 3 टीम्स प्लेस करी। जो ओपन सेक्शन होता है, ओपन सेक्शन में बेसिकली सब खेल सकते हैं मेन, वुमेन बट यूजुअली वी डोंट प्ले। तो यहाँ भी ओपन सेक्शन में वुमेन कुड हैव जो वुमेन चेस प्लेयर्स होती हैं दे कुड हैव पर उनका अपना अलग सेक्शन था तो दे डिडंट पार्टिसिपेट इन ओपन सेक्शन तो इट वाज लार्जली मेन डोमिनेटेड सेक्शन इन ओपन। तो ओपन सेक्शन में इंडिया प्लेस्ड ए बी सी टीम्स और वही वुमेन सेक्शन में इंडिया प्लेस्ड अगेन द 3 टीम्स and एंड so we were seeded the first in women's section. India was seeded number one in in the women's section. In the men's section, the first seed was first seed or first rank was yeah USA. And why USA? क्योंकि USA के पास Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Nakamura was not playing this time, but still these three names that I mentioned, they are some of the highest rated chess players of all time. All three of them with 2800 plus chess rating. So USA को मतलब everyone has built USA की USA will be steamrolling everyone else and winning this, but नहीं हुआ. This did not happen. So that was one of the most unexpected things, and we'll go forward to the other things like how the tournament proceeded. And yeah, with you over to you. या तो बट इंडिया को चेस ओलंपियाड कैसे मिला वो भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है क्योंकि जो भी हमारे यहाँ नॉर्थ में चल रहा था बिटवीन यूक्रेन रशिया उसके कारण देयर वर अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड स्टेटमेंट्स तो जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रशिया के ही वाज लुकिंग फॉर एन अल्टरनेट होस्ट ठीक है अब ये इन्फॉर्मेशन इट वाज नॉट मेड पब्लिक बट ऑन इट वाज अराउंड February 24-25 is जब भरत सिंह चौहान जो सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के he sent a message to the deputy prime minister of Russia कि कोई इंडिया को आप कोई सा जो टॉप लेवल टूर्नामेंट है चेस का आप उसे कुछ होस्ट करने में आप मदद करें क्योंकि ऑब्वियसली रशिया हैज दिस ह्यूज डोमिनेंस ऑन चेस सोसाइटी तो वहां से सिर्फ एक रिप्लाई आया कि हाउ अबाउट ओलंपियाड मतलब सालों तक आप प्रिपेयर करते हो तब जाके यू होस्ट an event as prestigious as a chess olympiad उसके बाद we just had a couple of months to prepare for this prestigious event एंड उसके बाद दिल्ली एंड देयर वाज तमिलनाडु जिसने अपना इंटरेस्ट दिखाया था एंड बट क्या हुआ कि उसके अगले दिन जो वही चौहान है ऑल ऑल जो फेडरेशन के हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन के चीफ है वो गए ही फ्लू टू चेन्नई instead of Delhi and he met Stalin our undertakingly and Stalin pledged almost rupees 92 crores within 24 hours. So India became the host of Chess Olympiad within 24 hours and उसके बाद 10 दिन बाद we get the official notice जो आया कि India will host the Chess Olympiad and Yep. yeah. Yeah, so yeah, that was very historic. India hosting the Chess Olympiad. We all know ki so lot of nations participate. Like apart from some, okay, I forgot to mention that Firoza and MVL did not participate for France. But ये थोड़े दो तीन nations, ये दो तीन GMs छोड़ के we had almost everyone participating, and the way Chennai welcomed all these guests from around the world was interesting, like great. And it's like प्रॉब्लम ये हो गया कि कॉमनवेल्थ के साथ चेस ओलंपियाड चल रहा था तो इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो वो भी एंड बट या वी द फर्स्ट न्यूज़ दैट केम फॉर मी वाज गुकेश डी आवर यंग ग्रैंड मास्टर लीडिंग सॉरी scoring 8 on 8 points in the first 8 matches
So Gukesh's fine run continued till then. Even against Uzbekistan's Abdus Satarov, he could have almost won that one. He was in a superior position, but a blunder led to his first loss. But still, Gukesh won the gold medal on board one, which is the top board. You can see how incredible this is. And ये चेस ओलंपियाड में ये बात हुई कि USA was built to do very well. They had these three 2800 plus rating wale grandmasters. But at the end, we saw that two young teams, the Uzbekistan team and the India B team, they did exceedingly well. So, and Hmm. thankfully, it's great for the future of chess as a sport and India in chess as a sport. Yeah. एंड इट वाज अगेन ऑब्वियसली गुकेश तो इसके साथ ना गुकेश ने इंटरेस्टिंगली नमन तो गुकेश हैज बिकम द टॉप टू मतलब ही हैज फाउंड हिज प्लेस इन टॉप मतलब ही इज द टॉप इंडिया का सेकंड बेस्ट प्लेयर है फिलहाल चेस में गुकेश एंड ही हैज आल्सो ब्रोक इनटू द टॉप 20 चेस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड so this is how Gukesh has been framing his own career वहीं जैसे यू मेंशन ना कि ही बिकेम मतलब उन्होंने गोल्ड जीता है यहाँ पे ऑन बोर्ड 1 तो ही हिज रेटिंग वाज़ ऑलमोस्ट 2867 जो उनकी रेटिंग थी एंड देन ही won the gold out of so Gukesh basically people were looking for more like Prag you know but Gukesh was out of syllabus but we expected him to somehow perform because he has been performing उनका consistent performance रहा है chess circuit में but people believe कि जो chess में जो elites हैं वो they believe that maybe Gukesh is a new chess chapter in India now. Yes, and the whole team, not just Gukesh, we had Gukesh, Nihal Sarin, Prag, and also Adivan Bhaskar and Ronak Sadhwani, all five of them. I guess Adivan is the only one who is like thoda born before the millennium. All these four guys are born after the millennium. And again, I would like to mention Uzbekistan team also because the similarities are very uncanny. We have the yeah, Uzbekistan Grandmaster Abdus Satarov, who defeated Magnus Carlsen to become the world rapid chess champion, took the crown of him. Then we have Yakubov, Sindaro, Wakido, Wokido. Only one of them is like uh, was born before 2000. He was born in 1995. Apart from this, a young team that won the Chess Olympiad, and as I mentioned, the India B team and two Indian teams were in contention, but the main team, Indian team of Pental, Hari Krishna, Vidit Gujarati, then Arjun Erigasi, Narayan, and Sasikaran. So they came fourth, finishing fourth after the India B team won the bronze medal. So we sent two teams, and both these teams did pretty well. Exactly. And Amrish, hi, welcome back. And also he mentioned that Adiban was also the part of 2014 bronze winning team too. तो इस जो टीम जीती है उसमें ऑब्वियसली इंडिया बी टीम में अधिवन वाज द ओनली पर्सन जो पहली टीम में था रेस्ट ऑल वर द न्यू किड्स इन द यंगस्टर्स अपकमिंग लेजेंड्स इन चेस इफ आई मे पुट दैट वे और उसके बाद हमारे जो बी टीम में वी हैड निहाल मुकेश अधिवन एंड रौनक performing in for India. Obviously expected हम कहीं expect कर रहे थे कि India team will outperform themselves, but India A, we were supposed to keep an eye on India A, but India B literally turned the tables around for all of the participants at the Olympiad. And even in the women's section, so we had the Indian team, one Indian team, the A team of Koneru Ampi, Harika, Vaishali, Hmm. Tanya, and Bhakti Kulkarni. So we had this team of India A coming third, but also finishing in the top 10, 8 position was the India B team. So even in Hmm. the women's tournament, we had like a good performance. Exactly. And also, obviously, someone mentioned, Amrish mentioned about Indian women. I mean, this is what exactly historic about Chess Olympiad कि हमारा ये this is India's first ever medal in women's section and India A won the bronze. Obviously, we were leading till the very final round, but I mean, by just 1 point, we lost to USA, who was the seventh seed. So it was kind of disappointing, but someone mentioned in one of the interviews कि ऐसे बड़े ओलंपियाड्स में ऐसा होता है कि वो टीम जो टॉप सीडेड होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आता है उन पे एंड दे यूजुअली गेट एग्ज़ॉस्टेड इतना And खेलने के बाद। हाँ।
these two things, I believe, two things took the title away from us. One Hmm. was in the last match, India lost to US, as you mentioned, for the seventh seed. हम USA से हार गए, and Hmm. the thing is, Harika was not playing in that Hmm. final match. बट द सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग 9 months प्रेग्नेंट, हरिका ने वो टूर्नामेंट में पार्ट लिया. शी प्लेड अ लॉट ऑफ मैचेस, शी डिड वेल इन ऑल ऑफ देम. सिर्फ वो लास्ट वन शी मिस्ड, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अगेंस्ट यूएसए. और इन मेंस सेक्शन इंडिया बी वाज लुकिंग ग्रेट until we lost to Uzbekistan, the match between Gukesh and Abdul Sataro. So we lost that one. Hmm. एंड वहां पे आई थिंक कि हम जो गोल्ड था वो गोल्ड से ब्रॉन्ज हो गया. सो ये वो मतलब मेरे हिसाब से ये दो डिसाइसिव चीजें रही है इस टाइम. एग्जैक्टली एंड इंटरेस्टिंगली जो हमारी टीम थी, हम्पी, हरिका, एंड देन वी हैड तानिया, भक्ति, वैशाली. वैशाली परसिस्ट. हरिका obviously did not play the final round because 4 player उतारते हैं in a team of 5. तो it's interesting कि a family is producing champions consistently. Like there is Pragnananda and then we have Vaishali. They both winning the same color medal at a at Chess Olympiad. I wonder कैसा मतलब I just want to understand यहाँ पे कि कैसा रहता होगा कि what kind of upbringing it does, क्योंकि यहाँ पे see it's not just one kid, it's there उनके दोनों बच्चे यहाँ पे they are making sure कि इंडिया यहाँ पे मेडल लेके आए at an event as prestigious as Chess Olympiad. Yep. And that, yeah, that was fantastic. Like both of them winning the bronze, but a very nice coincidence. Both Hmm. brother and sister winning the Hmm. bronze medal. And Ambarish has mentioned about Sam Shankland. Yeah, Sam Shankland of USA made a very big error. He even apologized on social media after that. He made a move it should not have. तो वो हो गया. Like होता है मतलब it happens in chess. Like you touch you move, so that is there, the first touch rule is there. So yeah, matlab, they came back. USA tried to come back after the blunder. We also had Norway, Magnus Carlsen's Norway doing very bad in the first half of the tournament, and they tried, but yeah, did not finish on the podium. uh, yes, Armenia were missing Levon Aronian. तो लेवन अरोनियन जो अर्मेनियन प्लेयर थे, उन्होंने अपना फेडरेशन अर्मेनिया से यूनाइटेड स्टेट्स कर लिया है. एंड दे डिड नॉट मिस बिकॉज अर्मेनिया ने सिल्वर मेडल जीता, और अरोनियन इन यूएसए वॉन ओनली वन मैच इन द होल टूर्नामेंट. Hmm. तो वो एक बहुत मतलब अर्मेनिया को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ इसका. So yeah, that happened. And yes, we हमने ये इंडियन चेस पे एट चेस ओलंपियाड हमने पूरे आर्टिकल्स डाले हुए. सो व्हेन यू गेट टाइम यू कैन रीड अबाउट द चेस ओलंपियाड और इंडियन चेस एट ऑन आवर वेबसाइट thebridge.in. And talking about women's section, so Ukraine was a strong team. So they had the sisters Maria and Anna Muzichuk, तो दोनों बहनें हैं, and also Anna Ushanina, former world champion. So Ukraine was definitely a great team, and they won with 18 points. But Georgia and Ukraine दोनों के 18 points थे, and the tie was determined by the Sonneborn Burger score. तो चेस में क्या होता है, इन टूर्नामेंट्स दे हैव द Sonneborn Burger score टू ब्रेक द टाइज. तो उसकी Hmm. वजह से इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन द सेम with the same points 18-18, they broke the tie with SBZ. So interesting कि टाई ब्रेकर्स हुए. एंड दोज हु डोंट नो, ये चेस ओलंपियाड में वंस यू विन अ पर्टिकुलर मैच, नॉट जस्ट अब एक एक प्लेयर, जो पूरा टाई होता है. लेट्स से इंडिया के 4 मैच, इंडिया के और आर्मेनिया खेल रहे, दे प्ले देयर 4 मैचेस, एंड आफ्टर 4 मैचेस जो टोटल स्कोर होता है, लेट्स से इट्स 4-0 और इट्स 1.5 2.5, देन द टोटल द टीम विनिंग विल गेट 2 points. इफ दे lose, they don't get any point, and it's a draw, it gets 1 point. तो ये जाके टोटल हुआ था. And we Hmm. had a tie in both the men's section and the women's section. Men's section में हमने देखा यूक्रेन जॉर्जिया tied on 18, यूक्रेन winning on the Sonneborn Burger rule, and यहाँ पे उज्बेकिस्तान अर्मेनिया. तो ये fantastic, very close tournament. We have a question. Is Ukraine a chess powerhouse? Tapish is asking. Currently, Tapish, Ukraine जो women's team है, और 3 of them are in the top 10. One of them is also a former world champion. दो बहनें दोनों world top 10 में है, and they that's why Ukraine had a former world champion. I think it's Ruslan Ponomaryov. So
Ukraine has a good chess history, and currently, so yeah, we saw what they did in the women's section. Welcome back, Viti. Hi, hi. Yeah. Is my voice still echoing? It was No, echoing to me. really अच्छा ही है. Let me know if it echoes. Better now. Okay. ठीक है एंड इंडिविजुअली भी अगर हम बात करें तो इंडिया डिड कॉन्कर अ लॉट ऑफ बोर्ड्स जैसे गुकेश वी ऑलरेडी नो गुकेश एंड निहाल दे वन देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स पे टॉप बोर्ड जो लीड बोर्ड होता है वहाँ गुकेश ने गोल्ड जीता और निहाल वन गोल्ड ऑन बोर्ड 2 और अर्जुन जो कि पार्ट थे टीम ए के ओपन सेक्शन में ही वन अ सिल्वर इन बोर्ड 3 एंड अगेन प्रज्ञानंदा ऐसा था कि Prag is losing somewhere the touch because Gukesh D was kind of overshadowing his presence at the Chess Olympiad. लेकिन Prag obviously from Team B he made his presence felt जब उन्होंने ब्रोंज जीता ओपन सेक्शन में इन बोर्ड 3 and obviously then there was women creating history. So Vaishali ne, this is exactly what I said. No, Prag and Vaishali making their presence on the very same board with the very same color. So Vaishali also won a bronze in board 3. Then obviously Tanya Sachdev, someone mentioned Tanya played very well और उन्होंने भी board 3 में अपना bronze जीता and then lastly we had Divya Deshmukh team being से she also won a bronze in board 3. Yeah, Divya Deshmukh was also there winning a medal for India. And yeah, as you mentioned, yeah, people are mentioning about Tanya. So Tanya played some really clutch games, and in the initial stages of the competition, she was the deciding factor after the other players had gone for a draw. So yes, very nice performance by Tanya Sachdev this time around at the Chess Olympiad. And looking at the overall scenario as far as India is concerned, I think we could have even won the gold here, both the women's team as well as the India B team. But yeah, winning a medal in both the women, especially the first medal won by women, तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा being the host and everything went according to plan. थोड़ा वो एक दो decisive matches की वजह से it is sport, it happens everywhere. So yeah, very successful event for us. एंड वी फाउंड आउट कि अभी आगे जाके एक राइवलरी जो बनने वाली है इंडिया अर्मेनिया उज्बेकिस्तान स्पेशली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ अब्दुल सत्तारोव इवॉल्व्स इन द फ्यूचर बिकॉज वी आल्सो हैव फ्रांसिस अली रेजा फिरोजा जो भी एक यंगस्टर है चेस ग्रैंड मास्टर सो लेट्स सी हाउ दीज players battle against each other in the future because we are seeing that Magnus Carlsen is losing interest. Firoza नहीं था तो वो बोला मैं नहीं खेलूं मतलब he won't be playing the world championship I think after this like Yes. because this time Nepomnian Chichi and he is playing Ping Liren. So let's see like how this pans out in the future but India के हिसाब से but problem ये होगी ना वित्ती अभी कि if this is in a foreign country हम टीम कौन सी भेजेंगे Exactly. हाँ. टीम टीम क्योंकि कौन सी वही था टीम ना कि हमने विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर रैंकिंग्स एंड रैंकिंग्स वी हैड हमने टीम ऑलरेडी डिसाइड करी थी एबीसी मतलब उस कैटेगरी में कर दिया एंड नाउ दैट वी हैव पीपल परफॉर्मिंग फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स नॉट एग्जैक्टली द एलीट टीम जो हमने एक्सपेक्ट करी थी बट इट्स मतलब ये अच्छा है ना कि नाउ वी हैव ऑप्शंस वी हैव यंगस्टर्स पोरिंग इन लॉट ऑफ टैलेंट और इससे क्या होगा ना मतलब इस चेस ओलंपियाड से ये होगा यहाँ पे नमन की इट वोंट बी जस्ट जिस हिसाब से चेस ओलंपियाड का क्या कहते हैं आप फर्वर था जब तक वो चला तब तक it won't be just limited to the boundaries of Tamil Nadu. It will eventually cross that and have a pan-India impact of chess. That will be and amazing to see. more players will also mean प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी क्योंकि अभी अगर नेक्स्ट अगर टीम देखे तो हमने ये 10 लोग देखे एंड इंडिया विल बी गोइंग फॉर आई थिंक गुकेश निहाल सरीन प्रग these three have been performing remarkably and from the first team we have the experienced Pental Hari Krishna Vidit Gujarati Arjun so I think there is some kind of uh, प्रॉब्लम टू मेक अ 5 member टीम अगर देखा जाए एंड आई थिंक इट विल बी मतलब वो उनका हेडेक है लेट्स सी बट दे शुड गो विद द बेस्ट टीम आई थिंक according to ranking या form मतलब anything but they should go with the best team as the team fit this team could definitely win the gold medal in the future considering how strong all of them are. Yeah, exactly. Yash Hars is saying my is the voice echoing. Is it my voice echoing? I want to understand that because I don't think so. It's coming from the back.
I can also hear my voice echoing for one, but अब नहीं है. Naman, is it from your end? I'm checking. Just give me a minute. You continue. Yeah, बस यही था. Chess Olympiad has left some amazing marks in chess history. यार मेरे लिए तो टू बी ऑनेस्ट फेवरेट पार्ट यही था कि द वे वी सेलिब्रेटेड, मतलब तमिलनाडु का जो हाइप था, जो कॉमन जो लोकल पब्लिक थी वहां पे मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था इधर कि द वे जैसे ही सब लैंड करे थे, द प्लेयर्स, द कमेंटेटर्स, जो भी मीडिया के भी पार्ट थे, the local people ensured that they feel welcome, they feel important, they feel significant, and they feel कि India will obviously give them memories. तो वही था कि जहाँ बेसिकली इट्स लाइक मोर देन टेकिंग जस्ट इंडियन फूड, वो लोग मेमोरीज लेके गए हैं चेस ओलंपियाड की. आई थिंक दैट इज मोर सिग्निफिकेंट द वे वी हैव होस्टेड चेस ओलंपियाड दिस टाइम. Am I audible now, Vithi? Yeah, you're audible. You're audible. Yep. Hmm. So people are talking about chess in future Olympics. So initially in 1920, 24 especially, Hmm. जब पेरिस में Olympics होने वाले थे in 1924, तभी Hmm. there were talks कि chess डालेंगे हम Olympics में. Hmm. But see, the Hmm. problem of Olympics is they have amateur and professional players. So professional players are not allowed in Olympics. We saw Jim Thorpe के medal strip off किए गए और इतने 100 साल के बाद उनको medals दिए गए थे. This was in Hmm. news recently. Hmm. So amateurism and professional, that's why they say that grandmasters and all these people are professionals. So we won't allow them to Hmm. play an Olympia. So what FID did, FIDE as we call them, so FIDE came up, FIDE was formed in 1924, though unofficial chess Olympiad हुआ, और उसके बाद they started having Hmm. these chess Olympiad, official chess Olympiad, जिसका हमने अभी 44th edition देखा. So Hmm. that has happened. So chess अगर Olympics में नहीं हुआ तो भी it's okay because we have chess Olympiad as a separate huge tournament which gets its own credit और इतना large scale पे होता है with more than 180 players participating. So yeah, Hmm. Vidit was disappointing. हाँ. He drew to every lower rank players playing both two game. Acha. Yeah, I mean, Vidit's performance was not that great considering where he ranks and his rating. But yeah, someone saying Suraj they'll not include chess in Olympics because there is no physical game. More than that, it's as I said, more about professionalism versus Hmm. amateurism. So वही है and हाँ, tennis is largely professional and is Samosa gang OP says Akshat Bunny. Leftovers from Commonwealth Games. And today Murli Shankar is participating in Diamond League. Yes. Okay. हाँ. And it is his debut, obviously. And interestingly, Naman, he's the only Indian participating at the Diamond League. Yeah. So Neeraj is he injured, has to so obviously again मुरली पे pressure नहीं रहेगा. Most probably he just has to stretch himself because the best of athletes perform at the Diamond League. और यहाँ पे भी he has to put his best foot forward ताकि वो एटलीस्ट वहाँ पे अपना प्रेजेंस वहाँ पे दिखा पाए. But obviously it's his debut and Murli has been doing amazing. So let's hope he does his ये best. Will be Ambarish is saying important. also there is an issue regarding the detection of doping among chess players. हाँ यार, रशिया कुछ WADA के हाँ. साथ हुआ था. Russia and WDA have a love-hate relationship from Hmm. gymnastics to athletics to now even chess. तो it's crazy, like Hmm. they have been stripped of medals. बहुत बहुत हो चुका है and uh, hi everyone. Hello. So we were just discussing about Chess Olympiad, how India performed, like how India welcomed all the nations of the world, and ये सब हो गया. Krishnakant Singh is saying, Chess, thanks for making video on Chess Olympiad. Thank you. And for those who have joined us, we'll be having a nice 15th August stream also, जहाँ पे हम इंडिया के बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस डिटेल में कवर करेंगे. ऐसा मत सोचना कि आपने ये इंक्लूड नहीं किया, वो इंक्लूड नहीं किया, बट विल ट्राई आवर Hmm. बेस्ट टू इंक्लूड what we thought were some of the best. Of course, many will be Hmm. left. People will think, "ये नहीं," but we'll try our Hmm. best. Okay. And now, And I एक और चीज़ है ना कि देयर आर वी हैड 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अब एंड सबके अपने लिए अलग-अलग मोमेंट होंगे व्हाट दे थिंक आर ग्रेट. सो ऑब्वियसली इफ यू मिस समथिंग देयर इज ऑलवेज अ कमेंट सेक्शन. यू कैन से अरे नहीं मुझे ये वाला पसंद आया. वी कैन टॉक अबाउट दैट इवेंट एज़ वेल. सो फील फ्री टू ड्रॉप दैट. एंड आई थिंक ना नमन में एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि आई थिंक इट वाज़ प्रवीण तिप्से जिन्होंने कहा था हू प्ले जीएम प्रवीण तिप्से जिन्होंने ही समड इट अप वेरी नाइसली
चेस ओलंपियाड जो इंडिया ने होस्ट किया उसको उन्होंने समड अप किया था इन वन ऑफ द आर्टिकल्स दैट आई रेड दैट इट्स लाइक ब्राजील होस्टिंग फुटबॉल वर्ल्ड कप. It just feels right. Yes, it Everything feels about this right. chess Olympiad felt right. Yep, yep. But see, the comparison with Brazil hosting Chess Olympiad would Mm. actually be Russia hosting Chess Olympiad, because Brazil football, Russia, it makes a bit more of sense. But I can Hmm. understand why it came home. It's more like हाँ. of England, it's coming home, wala football chant, true for Hmm. India, because now we are emerging as a superpower in chess, considering the Hmm. 70 75 plus grandmasters Hmm. that we have, and the increasing pace, because Vishwanathan Anand was the first grandmaster, uske baad humne किस speed से हाँ. grandmasters produce किए, and Yes. every few months we have a new GM coming up, and that too all these kids with born after 2000. तो वो Hmm. एक बहुत अच्छी चीज है, and let's hope मतलब और चेस कल्टीवेट होगा. And people are talking about BWF World Championship draw. Should we cover Exactly. BWF World Championship ka draw in a separate session, like I BWF think we Championship should. ka draw हाँ. we could I do? Yeah, mean, yeah, we could अगर definitely हम do that. डिस्कसिंग करेंगे तो we'll be able to analyze की क्योंकि जिस हिसाब से ड्रॉ निकला है गाइस इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट नहीं है बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया के शटलर्स कैसा परफॉर्म करते हैं. Yep. Then I think we need altogether a different stream for that. We can do that अलग से. Sarvesh is asking why India don't host Diamond League. Diamond League अभी athletics का उस level का infra, and I mean, has any nation hosted Diamond League? That's the question. We have Qatar. We have Qatar hosting Diamond League. Apart from Qatar, I don't think anyone else hosts Diamond League. So yeah, I'll come back to with a, better answer on this. Like I don't, मेरे को ऐसा reason नहीं मालूम India, but that kind of athletics infrastructure, and they have this league card, they have these member nations. But I'll definitely come back to you with a clearer answer on that question. Good question. Is it true two Pakistani boxers are missing in London from CWG team, says Krishnakant? Oh bhai, I did not read read this. I mean, Wait, let me see. uh, Let me हाँ, see. ऐसा कुछ है क्या? like मतलब till then, I hope you liked the coverage of the Chess Olympiad wrap up till now. And another thing we are going to cover in this short stream is 15 years of Chak De India. तो 15 साल हुए आज the movie Chak De India, since it was released, and it was one of the I would say the first and one of the best Indian movies that has released on sport. तो Hmm. आप बताइए आपके फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द मूवी टू स्टार्ट ऑफ थिंग्स, एंड देन वील इलैबोरेट ऑन सम ट्रिविया फ्रॉम दैट मूवी, एंड Hmm. और कुछ ऐड करेंगे हम लोग. तो पहले आप ये बताइए कि Hmm. चक दे इंडिया से आपके फेवरेट कैरेक्टर्स कौन थे. विल स्टार्ट विद दैट. And meanwhile when people do that तो yes जो डॉन है मतलब obviously डॉन पेपर जो है पाकिस्तान का they have reported कि yes we have to their two top Pakistani boxers have gone missing just an hour before they were supposed to be departed to Islamabad. Their name is Suleiman Baloch and Nazirullah. The investigation is still on, so they don't have any concrete statements on that. They have seized their documents and whatever travel documents they had with them. So yeah, this it's still under investigation. यप. ओके. अभी मतलब सम अप करने के लिए दो पाकिस्तानी बॉक्सर्स हैव are we can't find them in London, I guess, according to whatever the news report says, and they are still searching for them. uh, and a lot of people, Preeti Sabarwal says black, Kachra the leggy says RS Kachra the leggy was in Lagan. Don't confuse cricket and hockey here, please. I know we lost both That's the finals to cricket. Australia in CWG, but please don't confuse the sports now. Manish is saying Komal Chotala, and S Sinha is saying Chak De India, mix of patriotism and sports enthusiasm. Rajvardhan bol rahe MS Dhoni is the best. Out of context, but okay. Uh, okay. So Chak De India, why I think it's one of the, बिकॉज इट रीडिफाइंड एवरीथिंग. ठीक है. तो Hmm. 2002 में मैनचेस्टर में जब हमें गोल्ड मेडल मिला था, द विमेन्स हॉकी टीम को जब 2002 में मैनचेस्टर में गोल्ड मेडल मिला था, इट डिड नॉट गेट एज मच क्रेडिट एज इट मेरिटेड. और आज अगर हम देखेंगे, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द चक दे इंडिया मूवी, अलॉट लाइक पीपल केम टू नो कि विमेन्स टीम ने ऐसा किया था. इवन नाउ मेनी पीपल डोंट नो. और आज अगर हम देखेंगे कि कितना कॉम्पिटिटिव है सीडब्ल्यूजी में हॉकी, वहां पे एक गोल्ड मेडल जीतना, आज तक इंडिया ने एक ही गोल्ड जीता है हॉकी में सीडब्ल्यूजी में, तो वहां पे वो कितना हिस्टोरिक अचीवमेंट था. दे ब्रॉट दिस टू लाइट. और
एम के कौशिक जो थे इंडिया के कोच उस समय पे, द डायरेक्टर टॉक्ड विद एम के कौशिक एंड ही वाज इन्वॉल्वड, एंड देन एम के कौशिक उन्हें बोले कि व्हाई डोंट यू ब्रिंग मीर रंजन नेगी टू हेल्प विद द प्रोडक्शन. मीर रंजन नेगी बीइंग एन फॉर्मर इंडियन गोलकीपर, जो 1982 एशियन गेम में पाकिस्तान के साथ जो फाइनल हुआ था, वी लॉस्ट 7-1 इन दैट फाइनल. और वो 7-1 फाइनल हम हारे थे, तब मीर रंजन नेगी गोलकीपर थे. ही रिसीव्ड लॉट ऑफ बैकलैश. और वो आप देख रहे हो कि वहां से वो स्टोरी, मतलब हाउ हाउ इट रिलेट्स टू कबीर खान स्टोरी इन द मूवी चक दे इंडिया. तो दे brought मीर रंजन नेगी टू हेल्प विद द प्रोडक्शन. द कोच एमके कौशिक वाज देयर. तो ये सारा हुआ. अभिषेक त्रिपाठी सिंह, नवन बाय इंडिया आल्सो 9 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल. अभिषेक आई थिंक इट्स 8 टाइम, एंड यस आई नो we dominated world hockey for a long period of Hmm. time, for decades. Yeah. Yes. I couldn't find a 2002 match video Mamta Kharab playing in any match, says Rishikant Singh. Uh, okay, we'll have to search for that. Archives में से कहाँ से तो मिलना चाहिए वो. And yep. Uh, yes, Viti, you're saying something? Oh no, I was just going to correct him. It's not 9, it's 8. हाँ मैं हाँ. भी वही करती Yes, and SK was saying toddling statesman, वो I never knew about this. यार इसीलिए तो बोलते हैं आओ स्ट्रीम पे कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने मिलेगी, और क्या. SK is saying favorite वर, हाँ, एंड ममता खराब, जो जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में वो फाइनल इंग्लैंड के सामने गोल मारा था मैनचेस्टर में, ममता खराब पे कोमल चौटाला का कैरेक्टर लूजली बेस्ड है, as we saw Komal हूँ। Chotala in Chak De India. And favorite were in Vidya and Kabir Khan, says SK. I might sound partial, but yeah, but Bindya Nayak was also special because of her layers. Yeah, definitely the character of Bindya Nayak बहुत ही एक बढ़िया character portray किया. She her journey in the movie to being a senior player, fretting and then coming in to help the team in the match against South Korea semi final में, जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकली इंडिया ने साउथ साउथ कोरिया को हराया था सेमीफाइनल में. सो इट्स अ वेरी नाइस मूवी. अभिषेक, नहीं, राजवरी सिंह, हाउ अबाउट मेरी कॉम मूवी? मेरी कॉम मूवी इज अ वेरी गुड मूवी, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट चक दे इंडिया हियर. तो Yes. हाँ, Tapish is asked a good question. How technical, accurate was? Does real hockey players also acted in this movie? I don't think from India जो सामने वाले opponents वगैरह रहेंगे, they must be real players from other teams or random leagues वगैरह, and they shooting के लिए उन्हें लिया रहेगा. Did how technically accurate was Chak? This is Tapish. Tapish, the thing was technically accurate नहीं थी. That was a fictional depiction. बट दे हैड बेस्ड इट ऑन सर्टन स्टोरीज. तो अलग अलग स्टोरीज को कोलेट कर करके उन्होंने ये मूवी बनाई थी. एंड इट वाज नॉट सपोज टू बी अ बायोपिक ऑफ एनी सॉर्ट्स. इट वाज जस्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट कि वुमेन्स हॉकी को आप प्रोमिनेंस में कैसे लाए. इसलिए वो एक मतलब फिक्शनली था. इट वाज नॉट इंटेंडेड कि अगर धोनी एक मूवी हो गई, इट्स अ बायोपिक. मैरी कॉम इज अ बायोपिक. और ये सिमिलरिटीज बिटवीन मूवी एंड टूर्नामेंट, सिमिलरिटीज अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था मूवी में, और यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स था. तो इंस्पिरेशन वही था. वी फेस्ड फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया फेस किए थे, ओरिजिनल में इंग्लैंड को फेस किए थे. बट द बिगेस्ट थिंग इज इंडिया विनिंग अ गोल्ड, विमेन्स हॉकी विनिंग अ गोल्ड एट अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, क्योंकि दैट रिमेन्स आर गोल्ड. दैट गोल्ड रिमेन्स आर only first position in a major global tournament in as far as women's hockey is concerned. तो इसलिए वो ये किया था. Also, Naman, someone mentioned about कि इसमें कितने hockey players लिए हैं करके. Then obviously it's all fictional based. It's loosely related to obviously the different characters that we had. लेकिन someone में किसी ने प्रीति सबरवाल को mention किया था. तो प्रीति सबरवाल जो मतलब जो सागरिका हैं, वो national level hockey player रह चुकी हैं. That was one of the biggest reasons why she was chosen as to be the part of Chak De India. So I think that is the only मतलब यही है जो बहुत ज़्यादा closely related थी हॉकी से, only player. I think rest of them were from different backgrounds. अभिषेक त्रिपाठी इज टॉकिंग अबाउट सूरमा. यस, डेफिनेटली सूरमा भी एक बायोपिक है ऑन द फास्टेस्ट ड्रैग फ्लिकर संदीप सिंह. Hmm. तो संदीप सिंह के लाइफ पे वो स्टोरी है. इट्स अ बायोपिक एंड आई लव वाचिंग बायोपिक्स. मतलब मोस्टली इंडियन प्लेयर्स पे हो तो और ज्यादा पसंद आती है, बट आई वॉच Hmm. बाहर की, मतलब फॉरेन प्लेयर्स आल्सो. एंड यस, सूरमा वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी. संदीप सिंह, आई watched him play live, and excellent drag flicks after the way he made comeback after that shot in his leg. So Yeah. that was fantastic. And to tell you something कि अभी where are the characters from the movie, so what they are doing in real life.
तो विद्या शर्मा जी ने बोला जाता है कि गोल आप बीच में मारेगी सामने वाली इन द फाइनल, वी सी इन द फाइनल पेनल्टी। तो शी इज नाउ शी वाज रिसेंटली सीन इन इम्तियाज अलीज वेब सीरीज डॉक्टर अरोरा, और मतलब सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म में वगैरह काम करती है। एंड देन वी हैड कबीर sorry, Preeti Sabarwal, as Viti mentioned, who is the wife of an Indian cricketer, Zahir Khan. So Preeti Zahir Khan. is Zahir Khan's wife, and she's also a very successful fashion designer. एंड मेरे को ये एक अच्छा लगता है कि इन द मूवी शी वाज प्रपोज्ड बाय इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेटर, एक उन्होंने प्रपोज किया था, एंड एट द एंड ऑफ कोर्स प्रीति सेड नो, बट इन रियल लाइफ आल्सो शी मैरिड अ क्रिकेटर, सागरिका घाटगे डिड। तो वो एक चीज है। एंड वी हैड कोमल चौटाला। तो हमने बोला कि ममता खराब पे उनका कैरेक्टर, ममता खराब पे लूजली बेस्ड था थोड़ा उनका कैरेक्टर। सो she is also currently in the TV scene and was featured in the famous Sony sub series FIR. तो मतलब all these players like जो भी कैरेक्टर्स थे वो भी सारे के सारे एक्टिंग में है। Yeah, exactly. एंड एक इंटरव्यू देखा था मैंने जिसमें, तो वी हैड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बो ऑफ जहाँ पे कोमल चौटाला एंड आई डोंट रिमेम्बर द नेम, यार नाम कैसे भूल गई। तो वी हैड दिस जो चक दे इंडिया में एक हाँ, आई मिस दैट, ये ऐसे ना मेंशन ना, आई मिस दैट इल टेम्पर्ड पंजाबी गर्ल। तो आई बलबीर जस्ट कौर। डोंट नो। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो इनकी काफी इंटरेस्टिंग सी वो एक इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू था। तो उसमें शी आल्सो मेंशन कि बिकॉज़ कोमल चौटाला हैड टू स्पीक रूडली टू शाहरुख खान एंड टू अदर पीपल। तो उनको काफी ट्रेनिंग लगी थी उस चीज़ में। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था बिकॉज़ दे वर एग्ज़ैक्ट, मतलब जो उनका कैरेक्टर था वो उससे एकदम अपोज़िट थे, है इन एक्चुअल लाइफ़, दे कैन नॉट यूज़ रूड वर्ड्स अगेंस्ट पीपल। तो ये ओके। कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं चक दे इंडिया की। And Balbir Kaur incidentally portrayed a character. So she acted in the movie Chandigarh Kare Ashiki. तो she everyone all of these people are still in the acting scene. सारे के सारे movies में feature कर रहे, OTT platforms पे अलग अलग web series पे feature कर रहे। And people are saying thank you Abhishek, thank you for saying that Bridge is the best sports website. And someone is saying Surma is more believable than Chak De India. Surma is a biopic, चक दे इंडिया इज अ फिक्शनलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टोरीज जिनको कोलेट करके एक मूवी बनाया गया है, तो ऑफ कोर्स सुरमा इज गोना बी मोर एक्यूरेट। तो Yeah. मतलब हाँ, वही वही रीजन है या। एंड लकी सिंह इज बैक फ्रॉम बर्मिंगम, ही इज सेइंग व्हाई चक दे इज गिवन मच प्रायोरिटी, व्हाई रील ओवर रियल, व्हाई चक दे मतलब निखिल, द थिंग इज हियर वी आर ट्राइंग टू सी हाउ ए स्पोर्ट्स मूवी इंपैक्टेड अ जनरेशन। तो वो हुँ, प्रायोरिटी देने की बात नहीं है, उस मूवी ने जो किया, लाइक मेनी पीपल डोंट नो कि चक दे वाज इंस्पायर्ड, इट वाज लूजली बेस्ड ऑन द इंडियन स्टोरी, तो वी वांट टू ब्रिंग दैट इंडियन स्टोरी टू नोटिस। और हुँ, ऐसा नहीं है कि फिक्शनल मूवी है तो इट कांट इंस्पायर, there are हुँ, certain stories in each and every movie that can give inspiration to people in the हुँ, medium of sports, और आप जैसे यस, अलग अलग मूवीज देखोगे आपको वो रियलाइज होगा। टॉडलिंग स्टेट्समैन इज आस्किंग Naman, did you know all this from the beginning, or did you homework before coming in the stream? Either way, thanks. Toddling, I knew around 70-80% of the stuff. 20% I read before doing the stream. So, yep. Anyways, thank you. Hitesh Singh is saying, Chak De India became the nation slogan which boosted India's morale in हाँ, 2007 T20 World still Cup. does, still does. And another thing, so there was this one quiz question I remember, one of my favorites. It was like हुँ, Ultratech Cement sponsored which World Cup winning team from 2007. Now people what they tend to do is they think कि 2007 में India T20 cricket World Cup जीता था, and they हुँ, answer that. But Ultratech Cement had sponsored this women's hockey team from हुँ, Chak De India. एंड द मूवी वाओ! केम इन 2007, तो वो एकदम एक बढ़िया फंडा लगा मुझे।
the bridge according to which sport is not popular in India but India is pretty good at it. Ask Akshat. यार बहुत यार tough मैं question है. यार मैं चेस बोलना चाहूंगी। Eh, it's very popular in India. It's Super popular in not India. वेरी, It मैं is. इसीलिए मैंने कहा था आई आई दैट्स व्हाई मेंशन कि ना ये मतलब मेरे हिसाब से ना इट डिजर्व्स मोर अटेंशन देन इट हैज अभी, क्योंकि इट जस्ट वेरी मच लिमिटेड टू दिस, मतलब वो अभी भी लेमन्स ब्राउज़र में नहीं आया है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बिकॉज़ इट्स नॉट गेनिंग एज़ मच पॉपुलैरिटी। मे बी इसीलिए मैंने कहा कि चेस ओलंपियाड से शायद वो चीज़ बदल जाए। वी नो No, no. स्पोर्ट्स I बिकॉज़ इसी में ये सब हो रहा है और इट I इन think कॉन्ट्रडिक्शन। chess is very. I think chess is very popular. One of the things I will mention about is squash. Squash बहुत कम लोगों को अच्छा. Shantanu is asking Naman, why are you ignoring my comment? What was the best medal from you from CWG? As I mentioned before, ये CWG वाले क्वेश्चन बाद में लेंगे हम. मतलब अभी मतलब हो गया CWG. Still I'll say कि मेरा favorite medal was tied between no, favorite medal has to be Avinash Sabde. Yes, not favorite athlete. Favorite medal has to be. Uh, मेरा फेवरेट आई जस्ट मेंशन, ठीक है, इंडियन हॉकी ब्रोंज, ब्रोंज हाँ. मेडल। हुँ। Nikhil says he does not give much priority to Chak De. Okay, Nikhil, that are your views. We respect them. Everyone has their own views on each and every movie. Uh, हुँ, Basketball is least popular, says Rajvardhan. That's true. I mean, basketball, but again, we are not doing well globally in basketball, so question still हाँ, stands. मेरे हिसाब से closest answer इसका होगा squash. क्योंकि squash we have Saurav Ghosal winning a bronze. We have so many medals in the Commonwealth Games, which is almost at the world level when you exclude ये हुँ, क्या बोलते हैं इजिप्ट. तो इजिप्ट निकालेंगे तो वही वर्ल्ड लेवल पे है. तो और स्क्वाश कोर्ट्स इतने नहीं है इंडिया में. ऑफ कोर्स यू नीड अ लॉट ऑफ इंफ्रा. बहुत पैसा चाहिए. तो मतलब हुँ। आई थिंक स्क्वाश इज द क्लोजेस्ट टू दिस आंसर अकॉर्डिंग टू मी. पीवी सिंधु कैन बिकम वर्ल्ड चैंपियन. व्हाट डू यू थिंक? Isn't she a former world champion already? मतलब Yeah, but she can that's what I become know, again. but I think it's a bit tough. Like competition has increased from that time to now. We have हुँ, my problem is हुँ। Anse Young and Tai Zuing. Those two players I For me think are the it's problem. An, for me it's right now या मुझे ना चेन यूफे भी है यार, मतलब आप चेन यूफे को नहीं रोक, मतलब चेन मेरे लिए फिलहाल आई थिंक इट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इज चेन। नाउ वी विल वांट She टू टॉक has that. अबाउट लॉन बॉल्स। People should start playing lawn bowls actually. And chess अगर आप ये बात करें तो sorry chess नहीं हुँ, क्या Chen Yufei. Chen Yufei is not a चेन beautiful player I think. Like she is a very technical player. टेक्निक से खेलती है. शी स्टिक्स टू दैट. कम एरर. बट व्हेन यू सी द प्ले ऑफ एनसे यंग और ताइजुइंग आपको लगता है हाँ यार हुँ, दिस इज बैडमिंटन. दिस इज व्हाई वी वॉच बैडमिंटन. एंड दैट्स व्हाई पीपल यूज्ड हुँ, टू से दे प्रेफर ली चोंग वी ओवर लिन दैन. बिकॉज लिन दैन वाज अ वेरी ही वाज अ बीस्ट. ही वाज अ बीस्ट व्हाइल प्लेइंग. बट ली चोंग वी हुँ, हैड दैट फ्लूइडिटी. वो एक ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ प्ले था जो कि हम हुँ, टेनिस में रॉजर फेडरर का देखते हैं. सो इसी हुँ, रीजन से मतलब आई थिंक कि देयर इज अ सम काइंड ऑफ मतलब डिफरेंस कि आप एक टेक्निकल प्लेयर बहुत अच्छे और आप एक ब्यूटीफुल प्लेयर हो अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ प्ले. एंड दैट इज हुँ। व्हाट डिफर्स हियर. इंतनन भी है से शंतनु. हाँ यार इंतनन है बट आफ्टर दैट हिस्टोरिक 2013 वर्ल्ड चैंपियनशिप विन शी हैज काइंड ऑफ फिजल्ड आउट. Yeah. It's like she's not able to keep up the pace of the game. Somehow I feel like that whenever I watch her play, maybe. And Abhishek Tripathi Nadeem coach is giving credit to Neeraj for Nadeem's success. Yeah, yes. Arnub Goswami is saying got Mhm. recommended. Mhm. Hello, welcome to the channel, Arnub. Hi. Hi, we Yeah. just had a huge discussion about Chess Olympiad and Chak De India. If you have Mhm. questions or any favorite moments from both of these, please let us know. India has a bright player from golf, Aditya Ashok. The good thing I like about Aditya Ashok is she is pretty Hmm. average on the European tour, but Olympics में क्या Hmm. हो जाता है मालूम नहीं यार. इतना बढ़िया खेल लेती है कि आई एम लाइक हाँ 2024 में लाइक शी पीक्स ड्यूरिंग दैट ओलंपिक कि बस यही हमें बहुत ही वर्ल्ड लेवल का गोल्फ खेलना है. बिकॉज यू सी नेली कॉर्डा, पार्क इनबी, लिडिया को, ऑल दीज प्लेयर्स दे आर फैंटास्टिक थ्रू आउट द Hmm. देयर वर्ल्ड नंबर 1 2 3 ऐसा. Hmm. आदिति इज Hmm. नोवेयर इन द पिक्चर. शी इज वर्ल्ड नंबर 40 50 आती है ओलंपिक्स में. सडनली शी इज ऑन द पार्ट टू विन अ मेडल देयर. तो वो Yeah, I एक mean, वो I guess it was the third day and everyone was believing कि टोक्यो में शायद चौथे दिन आपका तूफान आ जाएगा and it would have happened.
तो हमारा सिल्वर तो पक्का था वहाँ पे गोल्फ में, इंडियाज़ Yep. हिस्टोरिक सिल्वर, Yeah. ओलंपिक सिल्वर, बट ठीक है, Ambarish is saying, शी डिड गुड। हाँ। Amber is saying, I read about squash in Pakistan. Thanks to you, Naman. Hey, great. Those who haven't, please read about Jansher and Jahangir Khan. Uh, हुँ। did you watch games of D Gukesh PKD boss? I couldn't watch the games because we were busy streaming all day ओह! for the Commonwealth Games. But yeah, we kind of summarized everything. Chess is हुँ, not in Olympiad. वैभव तिवारी वो एक प्रोफेशनलिज्म और एमेचरिज्म का एक बहुत बड़ा रीजन आया था 1924 ओलंपिक्स में इंक्लूजन के वक्त, इसीलिए एफआईडी जो फीडे है वो बनाया गया था। एंड नाउ दे डोंट थिंक दैट दे शुड हैव, बिकॉज चेस ओलंपियाड is a global event, 180 plus country, they don't need themselves to be recognized in Olympics, so they are like Olympics अपनी जगह, chess Olympiad अपनी जगह, हम भी इतना ही इधर हाँ, रुबाब करेंगे। So yep, हाँ, that's good, I mean that's because they have that representation and recognition हुँ, all over the world, so yep. हुँ। Gaurang Shetty is talking about what about Carolina Marin? I think Carolina Marin जब से उनको इंजरी हुई है, तब से she is trying Chess to get back on the get back onto the court, but she's trying, I believe. It's not easy. I think उनको I'm not sure क्या हुआ था. Maybe it was around her knee. So it was a match against Saina Nehwal. I clearly remember. After which she went off the court, got herself aided up, but she's just trying to get back onto the court now. It would be difficult for her to get back जैसा वो पहले खेलती थी वैसे, but I believe she can. Could there be a window for the sports enthusiast inside at the bridge से आनंद कुमार as internship or type of learning? आनंद, you can हुँ, definitely apply to us. कभी भी हमारा Instagram पे, LinkedIn पे post आता है कि there is some kind of opening, you can definitely send in a mail. आप अभी भी shoot कर सकते हो एक mail. India's performance in hockey final disappointing. What do you think? Manthan is saying, मतलब quick intro, but we'll first have Arnub's question. Quick intro about this channel and what content you provide. So we like to cover each and everything about Indian sport. So Indian sport पे हमने अभी अभी live stream शुरू किया, but we have a lot of videos. We have a website, Instagram, LinkedIn, Twitter, and as you can see, this is our Instagram page, and we are overwhelmed by the number of people wanting to join our team. As you can see, everyone has commented this. So please follow us on LinkedIn for any job vacancies, and we'll be putting it out. You can join for some short stints during an event to help and have fun at the same time, considering everyone is a sports enthusiast. तो yes, हमारा Instagram पेज भी है जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं, ट्विटर पे भी. So yep, that is there. Shankar Paul is saying, "Hey, I am new to this channel, but thanks for doing video on chess." Hey, Shankar, welcome. Hope you love our content about each and every sports. जो स्पोर्ट्स आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे, you must have not followed them. yeah. Hopefully, you'll love reading about them as we do and watching. And हुँ, so we have a lot of videos you can check out. A huge playlist, lot of huge playlist. Naman, Naman Bhaiya, please interview Sharath. Hey, we have had IG live with Sharath a long काफ़ी time हो गया इसलिए, but it was on Instagram, but but you I can I actually try honestly again. want to do that. I honestly want to You do should that do that. because since the You try last two doing that. years, Sarath has been my favorite player, and वो You मालोंग के should. मैच के बाद तो पूरा बदल, and he showed like वो ऐसा एक हाँ, फ्लूक बात नहीं, because 20 years you cannot do हाँ, something on the same level for 20 years. Okay, 16 साल के बाद हुँ, वही सिंगल्स गोल्ड मेडल जितना without any struggle is हुँ, like very rare. We can find it very rarely in a sports person. तो वो हाँ. एक है. चिराग Also, and Satvik as right someone fan. हाँ बोलो. mentioned about Indian hockey. So before that हाँ question gets lost, I want, हाँ. matlab, what happened to Indian hockey? See, I want to reiterate something that Shrijesh posted. उन्होंने यही कहा कि we didn't win gold. I know what happened. We know what happened. Even you know, all of us know what happened. And but it's about मतलब वही है कि you support them in their lowest lows. They know what happened, and we believe कि वो अगली बार they just come back with a new mindset. I think it And was it just a is mindset that we were lacking. important because only Hmm. 4 or 5 months from now in January we'll be having the FIH Hockey World Cup in Hmm. भुवनेश्वर. और Hmm. जिनको नहीं मालूम, मैं ये बता दूं, इंडिया एक ही बार वर्ल्ड कप जीता है 1975 में, जहां पे ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने फाइनल में गोल मारा था. And that time is the only time we have won a World Cup, FIH Hockey World Cup in men's. और इस बार home ground है. Apart from Australia, we have beaten all teams. We are doing well. Australia, so I think कि मतलब it's up to the coach now, but they can definitely follow the pattern that Belgium is Hmm. using against Australia.
वो Yeah. एक जो टेक्निकल है, we can keep aside our free flowing tactics and follow what Belgium is doing, थोड़ा analysis वगैरह करके, and definitely we can defeat Australia. It's no rocket science, it's a sport. So वो एक हो सकता है, and I think ये mindset important है. हाँ, Shantanu has asked doping angle in Arshad CWG performance. All of these things are assumptions, I feel. If an हाँ. athlete, अगर आप ये सोचो कि ये कोई दूसरे कंट्री का एथलीट या अपने कंट्री के एथलीट ने ऐसा कुछ किया होता, would you be questioning the same thing? You would be saying कि this is a great और achievement. ऑल्सो So, इवन आई बिलीव नमन कुछ भी जब भी मेडल्स वगैरह ये लोग देते हैं गेम्स वाले दे डू वो सारे टेस्ट करते हैं आफ्टर जो भी इवेंट खत्म होता है उसके बाद दे डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट उसी के बाद ऑफिशियली मेडल दिए जाते हैं तो आई होप यहाँ पे भी यहाँ ऑब्वियसली यहाँ yeah, हुआ होगा इट्स नॉट मी होपिंग और एनीथिंग हुआ होगा हाँ, तो अगर कुछ हुआ होगा तो we'll find out आगे जाके, as happens a lot. Yes. So it's all of these Right. assumptions we'll find out in the future. Yes, Bhavani Devi has won Commonwealth Championship fencing में. We also had a post on this today or yesterday, I think, on our Instagram page. तो अगर आप हमें Instagram पे follow करते हैं, you won't miss a single update about Indian sport. Anything to do with Indian sport, कोई भी player from the grassroots to the global stage, you won't miss anything. Why Rupinder Singh wasn't playing in CWG? Yes, Right. Rupinder Singh has retired. Rupinder Pal Singh, Mm, he has retired. mm. I was going through a lot of events in Sports City, got to know about a special case blood in water match. 1956 blood in water match was a water polo match between Hungary and someone, I don't remember, but Hungary was involved in that. So yes, blood in water एक बहुत aggressive physical match हुआ था. Yes, that's great, Askesh. Keep on reading about new and new stuff. So I think we'll have to bring the curtains of on today's live in some time, Yeah. and Mm, so I think we'll be stopping here. Our main purpose today was to talk about Chess Olympiad and mm. in Chak De India, 15 years reliving Chak De India. मुझे मालूम है ये 1 घंटा कम लग रहा है because हमने पहले 3, 4, 5 घंटे किए हुए हैं. So and yes, Santan, I'll repeat again, fishy वगैरह we'll find out अगर कुछ हुआ है तो still Mm. ये सब चीज assumption है यार. Don't spend time कि आगे देखो हम क्या अच्छा कर सकते हैं. Exactly. Athletics, we don't have good scope in long marathon future because we can't compete. I think most of public founding boring in India does not have the monetary value. What's your take? Huge question. We would like to cover it later, but we'll have to stop it here for tonight. Thank you so much for joining, folks. 15th Yeah. August, Azadi Ka Amrit Mahotsav, Indian Independence Day. Will be covering some of the greatest moments of Indian sport after independence in the past 75 years. Do join on 15th August. सब लोग ज्वाइन करना. Let us know what your favorite moments was, और मैं और विथी थोड़े moments पे elaborate करेंगे, and we'll let you know more and more stuff about Indian sport which you don't know Yes. And history you से. also come So up with thank you. amazing, you also come up with sports that you like and moments that you feel should have been included. It's fine. We'll have a very healthy conversation and discussion around these events. Let's celebrate Okay. India on the 15th of August and all the good things that have happened for past 75 years in sports. Thank you for Yep. joining, guys. Thank you so Bye. much, everyone. Thank you. See you Let's next meet on time. 15th. Bye. Yep.